When I look back to the days when I was a newly qualified chartered accountant and a fresher into the service sector, sometimes I literally regret about those career mistakes which I made as a fresher post qualification. And I really feel happy about some of those decisions which I took, which actually opened doors for my career ahead. In this video, I'm going to share some career mistakes as a fresher and best decisions from my journey, which might be helpful for your career as well. So before we start with the video, hi, my name is Poonam and welcome back to my channel. First mistake I committed was I prepared only one set of resume and used to share it for every kind of job descriptions instead of modifying your resume according to the JD shared with you. When I cleared my CA finals and started applying for the jobs, I used to get so many calls because I have a nice academic background and my attempt was also only two. So that's why I used to get so many calls. But sometimes it happened with me that, I myself get confused about like for which job profile they are interviewing me. We generally get very excited whenever we have any recruiters calls. We start answering their questions instead of first inquiring about the company and the job profile for which they are hiring. एंड लिटरली इसकी वजह से आई हैव लॉस्ट सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज जब भी मुझे कॉल आता था एंड दे यूज टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कि आपका कितना एक्सपीरियंस किस किस फील्ड में है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो एट दैट टाइम आई यूज टू गेट कंफ्यूज बिकॉज मैंने पहले उनसे पूछा ही नहीं कि किस जॉब प्रोफाइल के लिए है ये. फैक्ट व्हेन यू आस्क फॉर अ रेफरल फ्रॉम योर फ्रेंड और नोन वंस देन दे फर्स्ट सजेस्ट कि आप अपना रिज्यूमे को इतना पोर्शन इस प्रोफाइल का दिखाओ बिकॉज ये इसके लिए है. एंड आई वॉज सो लिबरल दैट समटाइम्स आई लिटरली वॉज फेड अप कि क्या बार बार रिज्यूमे चेंज करो. जब आप फ्रेशर होते हो तो आपके लिए बहुत सारे जॉब प्रोफाइल्स ओपन होते हैं. बस शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस को बढ़ाने के लिए हमें अपने रिज्यूमे को जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते रहना चाहिए. सेकंड मिस्टेक आई थिंक आई डिड वाज आई डिडंट जॉइन जेसीबी. जेसीबी इज वन ऑफ द, तो उस टाइम तक मैं ऑलरेडी एक सीए फॉर्म में काम कर ही रही थी एंड उसी के बीच में मैंने जेसीबी में इंटरव्यू दिया था, देन फाइनल सिलेक्शन हो गया था. बट दोनों के जो पे स्केल था उसमें सिर्फ 2000 का फ़र्क था. एंड मैंने जेसीबी को इसलिए ज्वाइन नहीं किया था बिकॉज वो घर से दूर था, उतना आने जाने का कन्वेंस ही लग जाएगा एंड और ये सब सोच के मैंने जहाँ थी मैं वहीं काम करती रही. सो जस्ट बिकॉज कि फॉर्म मेरे घर के पास थी मैं उस फॉर्म के साथ कंटिन्यू करती रही इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग जेसीबी, व्हिच आई रियली रिग्रेट बिकॉज कभी कभी ब्रांड नेम अटैच होना आपके रिज्यूमे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू कि काम कितना किया है आपने. The third mistake is similar to that because while I was continuing with that firm, I didn't stop giving interviews because my aim was to get into a good company or a good consultancy firm. So I never stopped giving interview until I found the right job for me. And one day I gave interview in BDO and I was offered the job on the same day. But I did not join BDO because location was too far from my home. So BDO ऑफिस तक पहुंचने के लिए मुझे डेली 4 आवर्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ता अपने घर से. एंड ऑल्सो उस टाइम विंटर्स का टाइम था, सितंबर था. सो आई वॉज फीलिंग लाइक कि मैं विंटर्स में मॉर्निंग में सुबह सुबह 2 घंटे का रास्ता जहाँ पे आपको ऑफिस 9 बजे पहुँचना है वो मैं कैसे करूँगी. तो इसलिए आई डिक्लाइन दैट ऑफर. आई रियली फील लाइक दैट आई डिड सच अ फुलिश करियर मिस्टेक बाय नॉट ज्वाइनिंग BDO बिकॉज एट द एंड एक टॉप 5 कंसल्टेंसी फर्म का नाम अगर रिज्यूमे में ऐड हो जाता देन रिज्यूमे का जो वर्थ है थोड़ा बढ़ जाता. एंड यू मस्ट बी सरप्राइज कि मैंने बाद में जो कंपनी ज्वाइन करी वो गुड़गांव में ही मुझे ज्वाइन करनी पड़ी. सो गुड़गांव जाना ही पड़ा. सो लेजीनेस की वजह से जस्ट बिकॉज कि कैसे उठूँगी कैसे 9 बजे तक पहुँचूँगी इसकी वजह से आई डिडंट जॉइन BDO. सच अ ह्यूज मिस्टेक ना. So you might be getting a vibe that I'm a lazy kind of person, but that's not true because I have a best decision to share. That is, I joined Yatra in Gurgaon on short-term contract basis. तो यात्रा में 3 मंथ्स का मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल था विच आई थिंक कि मैंने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि मैंने ज्वाइन कर लिया बिकॉज हालांकि वहाँ पे बहुत कम होता है आप ऑफ रोल जब काम करते हो, बट स्टिल आई ज्वाइंट फॉर 3 मंथ्स. एंड उसके बाद ये डिसीजन मेरा इसलिए बेस्ट बना बिकॉज वहाँ पे यात्रा कंपनी ने मुझे एब्जॉर्ब कर लिया था, अपने पेरोल पे ले लिया था. सो दैट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट डिसीजंस. My fourth career mistake is about being weak on negotiation part, negotiation for salary, pay package. क्या होता है जब आप नेगोशिएशन फॉर सैलरी करते हो तो आप सामने वाले की बातों में आ जाते हो. जो रिक्रूटर होता है वो आपको बताने लगते हैं कि हमारा बजट इतना है, हम इस रोल के लिए इतना ही ऑफर कर सकते हैं, आपका ये एक्सपीरियंस नहीं, आपने इसमें ये काम नहीं किया है, आप इतना डिजर्व करते हो. सो इन बातों में हम आ जाते हैं. सो आई विल गिव यू अ रियल एग्जांपल. एज आई टोल्ड कि यात्रा मेरा एक कंसल्टेंट के थ्रू हुआ था. सो दैट कंसल्टेंट पेड मी लेस एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स बिकॉज यात्रा में और भी काफ़ी सारे थे जॉइनर्स जिन्होंने कि उन्हीं कंसल्टेंट के थ्रू ज्वाइन किया था. एंड व्हेन यू इंटरेक्ट विद दोज पीपल पर्सन देन यू गेट कि उनको कितना मिल रहा है और आपको कितना मिल रहा है, मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस इन पे. ओके, सो वो वही डिपेंड करता है आपके नेगोशिएशन पार्ट पे. सो वीक होना नेगोशिएशन पार्ट पे इज सच अ वेरी वेरी बिग करियर मिस्टेक. सो व्हाट हैपन्स इज दैट कि जो भी रिक्रूटर होता है दे विल गिव यू सो मैनी रीजंस एंड एक्सप्लेनेशंस टू सेटल यू ऑन द लेस पे पैकेज एंड
होता भी क्या है कि जो हमारा माइंड होता है वो उस टाइम उनके बातों से इन्फ्लुएंस हो जाता है, एंड देन वी फाइनली सेटल ऑन whatever they are offering. I feel that I should not have settled for less. I should have asked for more possibilities because कहीं ना कहीं बजट होता है, बजट हम हमेशा हायर साइड पे लेके चलते हैं, एंड जो रिक्रूटर होता है वो तो अपने नेगोशिएशन स्किल्स शो करके कैंडिडेट को लेस पे सेटल कर लेते हैं, बट वी आर नॉट एबल बिकॉज वी आर समवेयर लैकिंग इन नेगोशिएशन स्किल्स. सो एज अ सेट की कंसल्टेंट के थ्रू हुआ था मेरा. सो उन्होंने मुझे बार बार यही बोला था कि यू आर अ फ्रेशर, यू आर अ फ्रेशर. जितने भी कॉल्स आते थे उसमें यही कहते थे कि यू आर अ फ्रेशर, हम आपको इतना ऑफर नहीं कर सकते हैं. बट एक्चुअली में यू आर नॉट अ फ्रेशर. हमें उसका आंसर देना आना चाहिए दैट हाउ कैन बी अ फ्रेशर. जब हमने 3 साल की आर्टिकलशिप करी है, हमने फर्स्ट ईयर में एज अ ट्रेनिंग काम किया, सेकंड ईयर में हमने कुछ आर्टिकल्स को सिखाया है, कुछ आर्टिकल्स को मैनेज किया है, देन थर्ड ईयर में हमने और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करी है, देन उसके बाद भी वाई वी आर स्टिल कंसिडर्ड एज अ फ्रेशर. This point came to my mind when I was discussing with one of my friend about pay packages and all. So I gave him a reason that because I'm a CA fresher, that's why. So at that time he explained me that why you're letting the other person to consider yourself as a fresher when you have already done your 3 years of articleship. So point here is that whenever someone offers you a low pay package by saying that you're a fresher, then you should explain to them that you're not a fresher, you're just having a tag name as CA fresher, but in terms of work you're not a fresher. So next mistake is in terms of interview preparation. We prepare for most possible questions, but we don't prepare for very basic questions. Many of the recruiters grilled me on so many basic questions which I knew, but I had to think twice to explain them. And by those basic questions, I mean meaning of those basic accounting terms and concepts which we read in 11th and 12th standard. Next mistake is not asking questions in your workplace. This may be due to fear of insult or embarrassment. So generally what happens जब हम job join करते हैं post qualification, तो सब हमसे यही expect करते हैं कि that we know everything, we have a pool of knowledge. But actually में हो सकता है कि CA क्लियर करने के लिए हमने कुछ टॉपिक्स छोड़े हों पढ़ाई करते वक्त, या फिर कुछ टॉपिक्स थियोरेटिकली पढ़े हो, बट हमें ये नहीं पता कि प्रैक्टिकली वो कैसे होता है. सो दैट्स वाई हमें पुट करना है क्वेश्चंस एज मच एज वी कैन विदाउट हैविंग फियर ऑफ बीइंग इंसल्टेड और फीलिंग एम्बेरेस्ड. आई मीन टू से कि स्टूडेंट्स वाला एटीट्यूड हमें वर्क प्लेस पे भी रखना पड़ेगा इन द बिगिनिंग ऑफ करियर. इट हैपेंड विद मी सो मेनी टाइम्स कि आई वांटेड टू आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, जब हमारे फील्ड से रिलेटेड नहीं होते हैं तब तो हम बहुत ही ईजिली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट जब हमारे फील्ड से रिलेटेड होते हैं तो उसको पूछने से पहले बहुत बार सोचते हैं. वी लिटरली थिंक सो मेनी टाइम्स कि क्वेश्चन पूछे भी या नहीं पूछे. तो आई थिंक क्वेश्चंस जिस टाइम माइंड में आ रहे हैं उसे उसी टाइम क्लियर करना ज़्यादा बेटर है. अगर आप बोल्ड हैं तो आप बिना ये सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, यू कैन पुट क्वेश्चंस एंड गेट आंसर्स. बट जिनको एम्बेरसमेंट और इंसल्ट का डर रहता है, आई थिंक कि दे शुड अप्रोच क्वेश्चन इन सच अ वे कि सामने वाले को समझ ही ना आए कि हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हमें आंसर भी मिल जाए. So those were all 8 career mistakes which I have shared through this video. So I hope this video was informative and maybe of some help to you. That's all for this video. I'll see you in another video very soon. Till then, take care. Bye.